के दिन का अंतिम मुकाबला होगा काजीरंगा राइनोज वर्सेस मराठा मार्वल्स के मध्य, यानी कि एक फुल ऑन एंटरटेनिंग पैक यहां पर देखने को मिलेगा आप सभी को। और सीधे चलते हैं अब हमारी दोनों ही टीम्स को इनवाइट करने, तो चलते हैं सबसे पहले बुलाने हमारी टीम मुर्थल मैग्नेट्स। और अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारी दूसरी टीम, यानी कि अरावली एरोज। और सीधा यहां पर बात कर लेते हैं हमारी स्टार्टिंग 7 की। मुर्थल मैग्नेट्स की स्टार्टिंग 7 तैयार है। एक बार फिर से जोश जज्बा और जुनून के साथ आशु मलिक वहां पर टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी संजय और मनीष पर कवर की यहां पर जिम्मेदारियां रहेंगी। विनय वीरेंद्र एक सरप्राइज पैकेज है अपनी टीम के लिए। उमेश पवार बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं और कृष्ण और विजय कुमार पर जिम्मेदारियां रहेगी कॉर्नर को संभालते हुए। दोनों का फॉर्म अच्छा चल रहा है, एक अच्छा संकेत है। जगदीप, राहुल, कुलदीप, अमित और परविंदर आर्यन यहां पर मौजूद होंगे सब्स्टिट्यूट में। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है नवीन, आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आज आप अरावली एरोज की स्टार्टिंग 7 की बात करने वाले हैं। Thank you, Harshit. Always nice and fun to be talking around when you are there. And Aravalli Arrows missing out. Jai Bhagwan, the big beam is not there in the substitution list as well. Lokesh Gosalia and Mahendra Chaudhary to look out the corners. Ram Kumar, who was a wonder of 3 games, 27 rate points. So he's been there, the rating department. So he'll be there very clearly, pairing in with Yuvraj Singh, and also Govind Gujjar and Kapil Gujjar are always there for the cover combination with Ganga Ram in the rating department. And also nice to hear a lot of nice words from you. Ankapalika, Vartala. Which newspaper you've been reading here, Harshit? तो चलिए नवीन, देखिए आपके साथ जब से कमेंट्री बॉक्स शेयर करना शुरू किया है तब से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, बट सीखने को मिलेगा आज यहाँ पर कॉर्नर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और ये है मैन टू वॉच आउट फॉर आशु मलिक। 111 रेड पॉइंट, जिस अंदाज में सुपर टेंस लगाते हैं, 6 सुपर टेंस इन्होंने लगाए। और रेड स्ट्राइक रेट की तरफ ध्यान दीजिएगा, 73। क्या शानदार, क्या अद्भुत प्रदर्शन आशु मलिक द्वारा। नंबर 7 जर्सी एक लकी नंबर है और इनके लिए वो लकी स्किल्स मौजूद हैं इनके पास। और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर कपिल गुर्जर, टैकल्स 93 में से सक्सेसफुल बना है, टैकल पॉइंट्स 46, 4 हाई फाई, टैकल स्ट्राइक रेट 45, जो सच में एक अच्छी स्ट्राइक रेट है नवीन। Yeah, marvelous strike rate. Kapil Gujjar is there to stop in Ashu Malik for sure. But also, we'll have to wonder and see and search who will be going in for Aravalli Arrows for the rating department, as both the captains were there in one before this. And the toss was recorded earlier where Murthal Magnets had won the toss, and they have selected the court as well, because what was happening was Manish Dhul said, okay, fine, I'll select the toss and I will take the court that we are standing on. So handshakes all around, and most importantly, what is going to come up is that third place team in the points table will be Murthal Magnets taking on the 4th place team without Jai Bhagwan, the Aravalli Arrows. So Murthal Magnets are at 3rd place in the booster round. They have won 8 out of their 11 matches and lost 2 in this Yuva Kabaddi series. But good start for them, because always they're coming in to this booster round, being the table toppers in survival round, had a lot riding on them. Aravalli Arrows today will be searching for that one raider who will get them a lot of points, because Jai Bhagwan is not around. I'm sure Ram Kumar and Yuvraj Singh will have to do a lot of raiding there to make sure the Murthal Magnets do not come on top of them. So it's all set for this match, and let's go for the countdown.
Ashu Malik was there right up in that number one slot, at least in that countdown there, but he will be making sure that he somewhere goes past the Raiders as Ashish Narwal and Pratik Daya are done for their respective teams. Now 111 rate points, but the raid will be starting from Aravalli Arrows as expected. Ram Kumar only 3 games, but 27 rate points, strike rate of 66% in the raids. So that is somewhere prompted Aravalli Arrows to drop in Jai Bhagwan and go in for this different combination. Let's see how this works out. And Ashit, yeah, it's been really nice to hear a lot of heavy Hindi words. But I want to know what you call points table in the Rajasthani language. What is points table called? देखिए राजस्थानी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो अंक तालिका के तौर पर आप उसे देख सकते हैं और अंक तालिका को वहां पर काफी प्रेफर भी करते हैं। पर चलिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपने बात की क्या जय भगवान जरूर नहीं है, परंतु आप इस खिलाड़ी को कैसे भूल सकते हैं। महेंद्र चौधरी को यहाँ पर आज मौका मिला है चेतन कुमार की जगह राइट कॉर्नर में खेलने का और उन्होंने आते संगी महेंद्र चौधरी ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। क्या लाजवाब जंप जरूर लगाना चाहते थे उमेश पवार, परंतु पहली ही रेड में यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन महेंद्र चौधरी द्वारा। Mahendra also making sure that the tackle was above the head of the chain. So very, very difficult. Umesh Pawar, not a light raider. So to bring him down from top was a marvelous effort. As once again there is a empty raid from Gangaram for Aravalli Arrows. But Murthal Magnets gets an Ashu Malik, the lead raider for their team. 111 raid points in the Yuva Kabaddi series as of now, and is striking at 73%. That's a very, very big number. But also coming back into form. Yes, he starts off with a wonderful miss. मुकाबला अच्छा जरूर रहा था और पेरियार पैंथर्स से दोनों ही टीम्स आ रही हैं। दोनों ही टीम्स यहाँ पर पेरियार पैंथर्स से एक मुकाबला अगर हम बात करें हार की तो पेरियार पैंथर्स ने दोनों ही टीमों को हराया है। और गंगाराम यहाँ पर देखना हो क्या विजय को यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। विजय कुमार कल भी बतौर डिफेंडर अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे थे और आज भी शायद कार्य कर रहे हैं। ये सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं और सरप्राइज एक और लेकर आए कि जाएंगे अब स्वयं रेड पर। मुरथल मैग्नेट्स के लिए एक बार पुनः एक अच्छी शुरुआत रही है। एक अच्छा टैकल में पॉइंट मिला है और एक अच्छा रेड में पॉइंट मिला है, तो एक अच्छी शुरुआत। और अरावली एरोज के लिए जय भगवान नहीं है और चलिए हो सकता है थोड़ा सा एक कोच बदलाव करना चाहता हूं, बट क्या राहुल चौधरी को भी वहां पर स्टार्टिंग 7 में और शायद सब्स्टिट्यूट में भी मौजूद नहीं है, तो क्या और कोई वजह है नवीन यहां से? Yeah, because they're just trying to make sure the new lot come into good effect, because here in this more place of experimentation, the Aravalli Arrows can afford for that one small experimentation. But when your defense is so strong in the opposition for the Murthal Magnets, you will be missing Jai Bhagwan even more in this match, as Sanjay Dhul gets that point with his Bhaichara with the captain Manish Dhul. Both the covers getting along together. But speaking about Ashu Malik, I'm really impressed by his performance in the last match, because that big win against the Humpy Heroes was all because of his brilliance, and then again he gets 2 points for sure. बिल्कुल, और लगातार जिस प्रकार से आपने बात की कि पिछले मुकाबले में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कार्य करना था आशु मलिक को, और उन्होंने जिस प्रकार से पहला मुकाबला उनके लिए इससे पिछले की अगर हम बात करें तो इतना बेहतर नहीं रहा था, पर पिछला मुकाबला एक तरह से अच्छी फॉर्म में आया और उसके बाद अपनी टीम को लीड करा। और अरावली एरोज शुरुआती 4.5 मिनट के खेल में यहाँ पर लगभग ऑल आउट की तरफ धकेल चुकी है। अरावली एरोज जरूर वापसी करना जानते हैं, परंतु इस बार युवराज सिंह, जिन्हें आज रेड में यहाँ पर मौका मिला राहुल चौधरी की जगह जय भगवान की जगह, उन्हें इस बार ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं, बोनस से संतुष्ट नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि महज एक खिलाड़ी अब आपके कोर्ट पर रह जाएगा। Yeah, and the back hold from Vijay Kumar. He did not go in for the waist. He completely went in for the shoulders, and that's the first all out for Aravalli Arrows in the starting 4 minutes of the game. It's not even completed. I should say the 4 minutes is not even completed. So within 3.5 minutes, look at that. Vinay Virendra just saying, okay, thank you so much for the all out, and Govind Gujjar just pushes him back very quickly. So this is a big lead, as Murthal Magnets have started off in a fantastic fashion. But somewhere, I really want to see if Aravalli Arrows can pull this off without Jai Bhagwan. If that happens, then these lads like Yuvraj Singh and Ram Kumar will get a confidence which will do a world of good for them. But it's tough. It's really tough, because Murthal Magnets defense, as of now, Harshit, I haven't seen them that they'll be making any errors.
बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए मैं थोड़ा सा एक बार सरप्राइज जरूर था इस बार विनय वीरेंद्र को फिर से शायद पॉइंट मिलेगा कि वहां पर गंगाराम ऑल आउट के बाद पहली रेड करने गए थे। राम कुमार आपकी टीम के मेन रेडर हैं, गंगाराम जरूर एक ऑलराउंडर के तौर पर आप उन्हें देखते हैं, परंतु क्या राम कुमार, और अच्छी उनकी फॉर्म रही है पिछले 3 मुकाबलों की आपने बात की, लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, अब जरूर यहाँ पर रेड पर है, चलिए देखकर अच्छा लगा। और विनय वीरेंद्र की हम लगातार चर्चा करते हैं नवीन, किस तरह से आप इस खिलाड़ी की उपयोगिता देखते हैं और कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर, चलिए इस बार तो राम कुमार को पॉइंट मिलेगा और कितनी खूबसूरती के साथ कोच अनिल विनय का उपयोग करते हैं नवीन, सच में इंप्रेसिव है। Very, very impressive. But somewhere here, Ram Kumar wants to impress everybody because Ram Kumar is that one wonder that Aravalli Arrows have got. Because in only the last 3 games, he's impressed everybody. But now with a 2-point rate that he's got, the deficit is somewhere reduced. But Umesh Pawar goes on with his regular business of reducing men on court, and it is Kapil Gurjar this time making an error. The captain sent out on that running hand touch. Present in the 10 a.m. match as well, and they're also continuing along for the UP franchisee, and also Sandeep Singh, the manager of the Bombay franchisee, Mumbai franchisee, I should be saying Mumbai, and also Anil Chapran, the coach of the Mumbai franchisee, is here to watch all these talents unfold. And once again, with a lot of effort, Gangaram gets 2 points. बिल्कुल ये देखकर अच्छा लग रहा है कि अरावली एरोज को अब रेट में पॉइंट्स मिलने शुरू हो रहे हैं, एक अच्छा संकेत है। और किसी शिकार बनाए विपक्ष टीम के कप्तान और साथ ही साथ वहां पर विजय कुमार को अपना शिकार बनाए, ये देखकर अच्छा लगता है। जब हालांकि रेडिंग डिपार्टमेंट आज थोड़ा सा युवराज सिंह वहां पर मौजूद जरूर है, राम कुमार, और देखिए आशु मलिक यहाँ पर किस तरह से वहां पर अंदर जाकर बोनस लेने का प्रयास किया उन्होंने, जी हाँ, और बिल्कुल आसानी के साथ वहां पर बोनस प्राप्त भी किया है। राम कुमार को पिछली रेड में 2 पॉइंट मिले थे और वहां पर गंगाराम को 2 पॉइंट मिले, यानी कि अब लगातार रेड पॉइंट्स में अरावली एरोज पॉइंट ला रहा है, परंतु डिफेंडर्स में अभी भी वो शायद शुरुआती मिनट्स में वो कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिला है। हालांकि वो वापसी जरूर करेंगे, पर वापसी राम कुमार की ये जंप देख लीजिए आप, अद्भुत नजर आ रहे हैं राम कुमार अब धीरे धीरे। Yeah, beautifully done, and also after the jump, the backtracking skills was really a mind to watch out for. Look at that, he jumped in the wrong direction, but then kept him away from Umesh Pawar, and then went into the midline with the backtracking skills. Yeah, I was just talking about those esteemed guests being present here, watching the match live in Sanskar School, Jaipur's Kabaddi Arena here for the Yuva Kabaddi series is pushed around. As once again, Ashu Malik, the dangling hand, has it been taken care of? No, the referee is counting, man. This is a big raid. I guess he's got more than 3 points. Yeah, that is what the coach also told to the camera by then. But I'm somewhere feeling it's more than 3, coach. I guess it's 4. Is it 3? Let's wait in. Yeah, it's a 4-point raid. A super duper raid. Once again, Lokesh Gosalia making that error in the ankle hold in the left corner, and then Kapil Gurjar, Govind Gurjar, everybody going in and surrendering themselves along with Mahendra Chaudhary as well. So the entire defensive unit of Aravalli Arrows has been wiped out by Ashu Malik. That is what the guests want to see. How good a kabaddi player you can be, whether it's raiding, defending, or even somewhere controlling the game. So that is why all the esteemed guests have come here, and no other place apart from Yuva Kabaddi series that you will be probably getting so much talent to make sure your team, or rather your franchisee, is the best team, getting along these talents also inducted into that. बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सबसे बेहतरीन जगह है। देखिए जिस तरह से हमारे गेस्ट की आपने बात की कि उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, यहाँ पर इस तरह से आप खिलाड़ी को परख सकते हैं, आप उनके टेम्परामेंट को जान सकते हैं, क्योंकि स्किल्स देखिए हर खिलाड़ी में होती है, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी सी कम होती है, परंतु टेम्परामेंट आप कहाँ पर भापेंगे। ट्रायल्स में आप उनकी स्किल्स देख सकते हैं, परंतु ट्रायल्स में आपको उनका टेम्परामेंट देखने को नहीं मिलता है। किस प्रकार से वो अंडर प्रेशर प्रदर्शन कर सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेगा। अगर युवराज सिंह यहाँ से पॉइंट लेकर आएंगे, अंडर प्रेशर लेकर आएंगे, तो कोच के दिमाग में अपने आप की एक परिस्थितियां बनाएंगे, और इस बार 5 नंबर जर्सी कोई गलती करते हुए नजर नहीं आएंगे संजय धुल। आज अच्छा लग रहा है, कल हमने बात की थी कि थोड़ा सा वीक लिंक थे संजय धुल कवर के तौर पर आज राइट कवर के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक अच्छे संकेत है मुरथल मैग्नेट्स के लिए। सिर्फ एक क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंख निकाली थी कवर्स के ऊपर से, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ समबडी इज हर्ट।
where our physio partners UEM, University of Engineering and Management, will come across very quickly. It is Sanjay Dull who has just got a cut on the lip, I guess, or on the nose. These cuts are not a big worry for me. I should be telling, yeah, they are brutal. I am not taking away that injury effect. But talking about the points table as well, Periyar Panthers are leading this, where Hampi Heroes have been made sure that they get that second place after the 10 a.m. game in the morning, where they easily won. I should be saying easily won because Tadoba Tigers were trying to come back from a very, very long match. But in the last raid, the error coming in from Vishal Chahal did not get Tadoba Tigers even that 1 point that they'll be wanting in for. But Hampi Heroes have trounced upon the Murthal Magnets, and then Murthal Magnets are now on the third place, but inflicting a second all-out in the first half itself. That's going to be a big one. So the substitution is being done. Yeah, 5 out is what the call is. See, I was just saying, Harshit, ये जो कट छोटी-छोटी सी कट जो लगती है, जो मतलब आईब्रोज के ऊपर या अपने होठों के ऊपर, that is not my big worry. लेकिन where I'll be really worried is when a raider or a defender does not stand up on his toes. And that is my biggest fear, because I really do not want any player to not stand up on the feet. So that shows that the injury is a little bit of an extra concern, and then we'll have to really dial upon Abhishek Gupta ji, the surgeon, when it comes to joint replacements and sports injuries in association with Metro Mass, our hospital partner. बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, घाव भर जाते हैं, परंतु वो जो मस्कुलर या फिर अंदर अगर बोन का कोई पेन हो तो वो आपको आसानी से जाता नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से आपने यहाँ पर बहुत ही बारीकियत से बात की, और अभिषेक गुप्ता जी की आपने बात की, मेट्रोमास हॉस्पिटल की आपने बात की, तो उन्हें धन्यवाद करना हम कैसे भूल सकते हैं। और हॉस्पिटल पार्टनर मेट्रोमास हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, और विनय वीरेंद्र। And Harshit, just taking a little time and discussing with you, because I really wanted to know if there is any surgeon for, of course there is a heart surgeon for sure, but if your heart is broken somewhere by somebody, Harshit, I'm sure you've had a lot of heartbreaks. Is there any surgeon for that? No. You've not? You haven't had heartbreak? Oh man, that's nice. Lucky guy, lucky, huh? Nice. So you've been lucky enough to be in Jaipur, and lucky that you're not in any other big metro city for a heartbreak. But look at this, for a heartbreak for the defenders of Murthal Magnets. A super raid for Aravalli, much needed. Manish Dhul committing that error when Sanjay Dhul is not on the court. The defense looks somewhere weak, and Ram Kumar make a point for himself. Ram Kumar gets that super raid and gets back Aravalli into the hunt. एक्सीलेंट ऑल राउंड प्रदर्शन यहाँ पर राम कुमार, और इसी की हम बात कर रहे थे कि क्यों आप अपने सर्वश्रेष्ठ लीडर, परंतु चलिए विनय वीरेंद्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विनय वीरेंद्र भी एक और पॉइंट की शायद मांग करना चाहते हैं। गोविंद गुर्जर को तो जरूर अपना शिकार बनाया है, कपिल गुर्जर को भी वो अपना शायद शिकार बनाना चाहते थे। देखना होगा यहाँ पर जिस प्रकार से इतना एडवांस जाने की आवश्यकता नहीं है। गुर्जर भाइयों को जरूर हमने इनकी प्रबलता की बात की है कि बहुत प्रबल है बतौर, दोनों जब साथ होते हैं, परंतु इस तरह से एडवांस टैकल वॉक लाइन के इतना आगे जाके come on. In that replay, I really felt Kapil Gurjar is somewhere touched in Umesh Pawar's legs, and he was just making sure that he did not get the angle right. And then look at that. It's a clear touch. I will vouch for this. And Vinay Virender, unlucky, totally unlucky for me. Vinay Virender today should have got 2 out of it. But then we'll have to accept what the referees say on court. The replay clearly showed that it was 2 points for Vinay Virender, as there were 2 defenders in contention. One definitely was Kapil Gurjar. जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से नजर जरूर आया था कि वहां से एक पॉइंट कुछ मिलेगा, परंतु देखिए कई बार जिस तरह से पता लगता है शायद वहां पर हवा में क्या कोई संपर्क हो। तो चलिए, विनय वीरेंद्र बेहतर जानते हैं, कपिल गुर्जर बेहतर जानते हैं, परंतु विनय वीरेंद्र की हमने लगातार बात की है। लेफ्ट रेडर और हमेशा बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं अपनी टीम के लिए। और अब कवर जो कॉम्बिनेशन है, कपिल गुर्जर और गंगा राम वहां पर मौजूद है। गोविंद गुर्जर को पिछली बार अपना शिकार बनाया था 11-24, यानी कि लगभग पौने 13 मिनट का खेल है। क्या इस बार शिकार बनाएंगे, या इस बार गंगा राम, कपिल, लोकेश और साथी डिफेंडर की जोड़ी इस बार विनय वीरेंद्र को धरने में कामयाब हो जाएगा? Can you believe this? Can you believe this?
if Kapil Gurjar was given out in the previous raid, he wouldn't have had this opportunity to put in this big tackle and send out Vinay Virendra. And look at what has happened. For that small little luck that was riding on Kapil Gurjar's favor, he's tried and capitalized on that. So, Harshit, somewhere Kalyug is on, brother. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कलयुग तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चल रहा है और बहुत ही अच्छे अंदाज में आप जिस तरह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, प्रीटी मच गुड। और इसी प्रकार से गुड यहाँ पर मैट पर ये खिलाड़ी नजर आता है आशु मलिक। जैसे आप इन्हें मैट पर देखते हैं और एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। देखिए इनके फुटवर्क में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर नजर आएगी मुर्थल मैग्नेट्स के लिए। कपिल गुर्जर अपना शिकार बनाना चाहेंगे, लोकेश गुजलिया का सपोर्ट। और कपिल गुर्जर जैसा खिलाड़ी अक्सर एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। बतौर कप्तान अपनी टीम को अगर वापसी की उकार बनानी है, लोकेश गुजलिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट। कपिल गुर्जर और कवर और कॉर्नर कॉम्बिनेशन अरावली एरोज में हमेशा अच्छा देखने को मिलता है। No, really well done, because they will really want to know that if Ashu Malik would have been there going for that point, it would have been really a devastating one. As a do-or-die raid now for Ramtour. Can the super tackle be inflicted by the Murthal Madness? I really want them to come across. Yes, they have come across. That is what I really wanted to see, and they have come across in what a strong fashion. A super tackle. Ramtour goes out on the bench. Right corner, getting it completely right. Krishan Dhul this time with the super tackle attempt, and it was very, very successful. Much needed as well. जी हाँ, बहुत अच्छे अंदाज में कृष्ण दुल का यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिफेंड और एक अच्छा टैकल वहां पर। और राम कुमार को अगर आपने बाहर भेजा है तो अच्छा संकेत है, क्योंकि विपक्षी टीम के पास अब कोई अच्छा रेडर जरूर मौजूद नहीं। इस बार जरूर यहाँ पर गलती करते हुए नजर आएंगे। क्या वहां पर महेंद्र चौधरी थे? इस मुकाबले में इन्हें स्टार्टिंग 7 में खेलने का मौका मिला है। चेतन कुमार की फॉर्म थोड़ी सी चिंताजनक था, जिसके चलते कोच ने वहां पर शंक करने चलिए कहा कि महेंद्र आप जाइए। इस बार छोटी सी गलती जरूर है और ये एक जरूर थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है, एक चिंताजनक विषय अरावली एरोज के लिए कि एक ही प्रॉपर रेडर आपको नजर आ रहा है। राम कुमार के अलावा गंगाराम एक ऑलराउंडर हैं, तो आप किस तरह से नवीनी से देखते हैं? Yeah, and there you go. Gangaram confuses Krishan Dhul and gets his hand touch on his knee and comes back with very big ease. Tries for the toe touch first, then the kick, and then somewhere Krishan Dhul said, okay, let me go for the back hold, but then immediately on that reverse gear. And talking about reverse gear, I understand, Harshit, when we were speaking about Kapil Gurjar, and you actually said, okay, Kapil Gurjar बेहतर जानते हैं उस टैकल में क्या हुआ था. I know why you said that, because he plays with the Rajasthan police team, and that is why you just actually put it across like a very, very subtle movement of talk, because he started playing in 2015 in Kabaddi. He actually played cricket a lot. That's nice to know that Kapil Gurjar played cricket a lot, and then his brother said, no, I play Kabaddi. You also get some interest in Kabaddi, and let's play Kabaddi in Homegrown Stadium, Jaipur. So that is where the mud was being turned around towards the mat, and he trained from Rajnarayan Sharma, and then Dinesh Chaudhary also helps him to practice in the police team. So that is why I guess, Harshit, you went little subtle on him, yeah? देखिए नवीन, उसका उत्तर तो मैं आपको बाद में दूंगा, बट Come on, go for it. इतना सारा कंटेंट मिलता है नवीन। देखिए किस तरह से आप ये बातें खुरेद कर लेकर आते हैं, किस तरह से आपको कंटेंट मिलता है। देखिए मुझे लगता है खुरेद कर जैसे आपसे कनेक्ट करता हूँ ना, मैं खुरेदने के बाद आपसे जो कनेक्ट करता हूँ ना, वो मुझे अच्छा लगता है। All thanks to Ashwin there, who gives us lot of data. Yeah, all thanks to our man Ashwin, who's been the backbone for data and every help for what the commentators speak on air. He's been one of the best producers here for Yuva Kabaddi series and on fan code. We really enjoy this game of Kabaddi, and also a very, very strong team across. Yeah, but then jokes apart, playing in for different teams gives you different talents, different strategies, different techniques, and Kapil Gurjar, nothing to take away from him. As once again, the running hand touch was so swift. He went in so very deep, and Tausif Ahmed was replaced, or rather substituted, but his footwork was good, but running hand touch, I guess he did not get any point there, Harshit. देखिए तौसीफ अहमद, बिल्कुल आप ये शायद एक बार फिर से देखना पड़ेगा जब वहाँ पर हम हाईलाइट देखें, क्या इसमें पॉइंट दिया गया था, क्या यहाँ से टच पॉइंट था? ऐसा लगा जरूर इतना डीप जाकर वहाँ पर शायद एक पॉइंट प्राप्त किया था मेरे मुताबिक।
और अब यहाँ पर राम कुमार डू और डाई रेड में जाएंगे, यानी कि निश्चित तौर पर पॉइंट नहीं था और पॉइंट इस बार भी नहीं मिलेगा क्योंकि मुरथल मैग्नेट्स का डिफेंस कहेगा वी आर ऑल सेट टू फायर नाउ। युवराज सिंह को सब्स्टिट्यूट किया गया था, तौसीफ को बुलाया गया था और विजय कुमार अपनी टीम को अगर विजय दिलाना चाहते हैं, जीत दिलाना चाहते हैं, तो विजय का जय जयकार करना बहुत आवश्यक है। And here Umesh Pawar needs to repeat what definitely what Ram Kumar did not do. So he's coming into the do or die raid. He is kind of having it difficult against 4 men. Somewhere can he go in across ankle hold? Very, very strong. And once again, the policeman from Jaipur, Kapil Gurjar, gets that double ankle hold on Umesh. Look at that for a tackle. And just talking about that stadium, Harshit, I wanted to know from you, how is that stadium now just been converted? And it is nice to see where where Kapil Gurjar is kind of training, and it's nice to mention about Chaugan Stadium. Have you visited that place? देखिए, राजस्थान में कबड्डी का गढ़ कहा जाता है चौगान स्टेडियम, जहां से बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे सिर्फ हम कबड्डी की ही नहीं हो, यहाँ पर ये क्या वेस्ट होल्ड है, क्या ये वेस्ट होल्ड है, जिस तरह से इस बार डिफेंडर ने वेस्ट होल्ड को जकड़ा है, वेस्ट होल्ड के जरिए जकड़ा है, उसी प्रकार से कबड्डी का एक बहुत बड़ा महत्व का अंदाज है चौगान स्टेडियम। एथलेटिक्स के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है चौगान स्टेडियम और खेलों का गढ़ है, सिर्फ कबड्डी नहीं, सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि खेलों का एक बहुत बड़ा गढ़ है चौगान स्टेडियम। और वहाँ पर बहुत सारे कोचेस हैं, जिस अंदाज में कोचिंग दी जाती है, डिसिप्लिन के लिए दाद दी जाती है, और चौगान स्टेडियम के बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम होगा नवीन। वाह वाह, और जितना कहा जाए इस टैकल के बारे में उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि उमेश पवार, in fact there was Vinay Virender there, he tried his best, he tried in a double dubki also, see 1 and 2, no, he's been cornered across by that strong defense of Mahendra Chaudhary, who was very, very lethal in that defense. There you go, the first half done and dusted, concluded. Kapil Gurjar wanted to go in for that just a formality raid, but then the referee is saying no, it's time up. Murthal Magnets 30 and Aravalli Arrows 16. So somewhere Murthal Magnets having it in front of them because of the defense, and Aravalli Arrows struggling with the raid points. Ram Kumar is only the raider who's done well. They are missing Jay Bhagwan big time, as we will try and soak in some highlights of the first half. And talking about a lot of sports, of course I agree, Rajasthan खेलों की गढ़ है, लेकिन इस highlights के बाद हर्षित एक ब्रेक के बाद हम लोग थोड़ी खाने के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के खाने के बारे में भी। फॉर श्योर। और आपको इन्विटेशन भी दिया गया है यहाँ पर कि आप जल्दी से राजस्थान आइए, जयपुर की आपको मेहमान नवाजी दिखाते हैं, आपको पगड़ी पहनाते हैं, धोती पहनाते हैं और कुछ दिनों के लिए गांवों में भी ठहराते हैं। I would love that. We've been to Jaipur on a very, very recent travel and recent occasion. I love the Sheesh Mahal. I love the Hawa Mahal more than the Sheesh Mahal, because you're there standing in front of that wonderful architecture. A lot of pigeons across, and nice to be there. And the food, I'm a big fan of dal bati churma in Jaipur. The dal bati churma gives a lot of coolness inside the body. But no coolness here for Aravalli Arrows, because they have been facing the heat against the Murthal Magnets. Big time heat that's been dissipated by Ashu Malik in that raid, where he got 4 points. And then somewhere Vinay Virender also stealing away points in tandem. But towards that later half, or rather towards the dying moments of the first half, the defense of Aravalli Arrows has come across together with Kapil Gurjar leading in front. This was the point where Vinay Virender would have felt that he was unlucky to get out Kapil Gurjar. But then the captain of Aravalli Arrows making sure he's always there and tackle, along with Mahendra Chaudhary and Govind Gurjar, to keep the Raiders down from Murthal Magnets. And this backward was phenomenal by Vijay Kumar. ये ताकत का परिचय था, ये उनकी बैकहोल्ड के साथ साथ ग्रिप, देखिए बैकहोल्ड में बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, और जिस तरह से यहाँ पर ग्रिप नजर आई थी वो सच में अद्भुत थी। और अगर हम चलिए पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, मुरथल मैग्नेट्स 30-16 से यहाँ पर आगे जरूर है, और वहाँ पर मुरथल मैग्नेट के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट प्राप्त किए आशु मलिक ने, 8 पॉइंट लेकर आए। और वहीं में अगर हम बात करें राम कुमार, 11 रेड पॉइंट्स में से 7 पॉइंट राम कुमार लेकर आए, टैकल पॉइंट्स में भी ज्यादा आगे नहीं है मुरथल मैग्नेट। ऑल आउट पॉइंट्स यहाँ पर जरूर 4 हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत ही जल्द सेकंड हाफ में हम स्वागत करेंगे आप सभी का।
तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का युवा कबड्डी सीरीज के मैच नंबर 59 बूस्टर राउंड डे नंबर 4। और जिस अंदाज में हमने बात की थी कि आशु मलिक शुरुआती हाफ के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे, सिर्फ मुर्तल मैग्नेट्स के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से। और यहां पर लीजिए आप, जिस तरह का प्रदर्शन आप देखना चाहते हैं वो प्रदर्शन अब आपको देखने को मिल रहा है। महेंद्र चौधरी अपनी प्रेजेंट स्टार्टिंग 7 में चेतन कुमार की जगह इन्हें मौका मिला है तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा डिफेंस, एक बहुत अच्छा थाई होल्ड। Yeah, as I just said, the defense of the Aravalli Arrows is coming back, and especially towards the dying moment of the first half, they were having the momentum going towards them. That is nice to see because only your defense can save your points, and then the Raiders can bring you back in the match. But he will now and make that very, very tough, even for a good Raider like Gangaram to get a point. और देखिए विजय कुमार ने इसी के साथ अपना हाई फाई पूरा कर लिया है। शुरुआती पहले हाफ के जस्ट दूसरे हाफ में शुरुआती मिनटों में यहां पर अपना हाई फाई पूरा किया है। ये एक अच्छे संकेत हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं मुर्तल मैग्नेट्स के लिए कि विजय कुमार जैसा कॉर्नर फॉर्म में लगातार देखने को मिल रहा है। लेफ्ट कॉर्नर और बहुत ही शानदार डिफेंडर्स में इनकी भी गिनती होती है और अपना कार्य दिखा रहे हैं। क्यों? और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि डिफेंडर्स आज यहां पर यूपी फ्रेंचाइजी हमने बात की तो उनके कोच बहुत ही नजदीकी तौर पर देख रहे हैं और विजय कुमार के अब सबसे ज्यादा नजदीक है। देखिए वो या विजय कुमार ज्यादा नजदीक जाना चाहते हैं। that is the point, right? Yeah, but और इसलिए तो नवीन आपको महा कमेंटेटर कहा जाता है। You are one of the very greatest commentators. अरे बाप रे बाप। It would be nice to see all these franchisee owners also, or rather anybody come and also have a talent scouting of the commentators also, isn't it, Arshit? I'm sure you will make it. You will make it for the first row. You will make it in the front row for it. Yes, but I will book the. देखिए वैसे क्लास में हम बैक बेंचर हुआ करते थे, बट यहाँ पर जरूर आगे आगे बैठेंगे। अरे जो क्लास में पीछे रहे हैं वही मतलब ये सब कुछ कर पाते हैं। ना कि हमारे दोस्त अश्विन जैसे जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं और मतलब देखिए अभी आंकड़ों में वो माहिर है ना। बिल्कुल, और एनालिस्ट बहुत बड़े हैं वो। कबड्डी परफॉर्मेंस की अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी के लिए, चाहे वो पीकेएल में बात करें, बहुत सारी जगह उन्होंने अपनी सर्विसेज दिए और सच में बहुत ही कम उम्र में जिस प्रकार से ग्रो करते हुए नजर आए। और युवा कबड्डी सीरीज भी जिस तरह से काफी कम समय में सभी की जुबान पर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में नाम छा गया युवा कबड्डी सीरीज का, तो धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का। चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम हो या फिर हमारी प्रोडक्शन की टीम हो या फिर हमारे सभी खिलाड़ियां हो या फिर रेफरीज हो, कॉमेंटेटर्स हो, एंकर्स हो, सभी की जितनी तारीफ की जाए युवा कबड्डी सीरीज के लिए उतनी शायद थोड़ी कम होगी। Definitely, big series, and it's just a beginning of the summer edition. And yeah, very rightly mentioned about everything that you told about Ashwin, our very good friend who always is there for us to help out everything. But आपने ये कहा कि बहुत कम उम्र में, अरे no हर्षित, he is very old. देखिए उनकी स्मार्टनेस से तो ऐसा लगा नहीं था। बाकी एक बार खुद से आज मैं, आपने कहा है तो एक बार पूछकर मैं आपको जरूर आधार कार्ड चेक कर लीजिए, आधार कार्ड एक बार चेक कर लीजिए आप। वो फोटो के चलते दिखाते नहीं है। lovely as there is a empty raid coming in from the Aravalli Arrows, but do or die raid for Umesh Pawar, and this is another replay of what has happened, and this time it is that defender once again, Mahendra Chaudhary, pinning Umesh Pawar down for the second time in this match on the same fashion. Remember what happened in the first half? It was similar to this tackle, catching him mid-air. And what a revelation Mahesh Chaudhary has been here today, Harshit, as once again Ramkuar comes in for a do-or-die raid. एक बार फिर से अरावली एरोज के पास मौका है, क्या टच पॉइंट लेकर आना चाहेंगे रामकुमार, कितना अंदर जाएंगे विजय कुमार की तरफ, जा जरूर है, शायद बैक किक लगाने का भी प्रयास करेंगे। डू और डाई रेड है, महत्वपूर्ण रेड है, रामकुमार क्या डैश कर दिए गए हैं। इस बार देखना होगा क्या एक पॉइंट बराबरी पर दिया जाएगा, ऐसा लगा रेफरीज को देखते हुए, परंतु एक बार फिर से निर्णय करना चाहेंगे क्या रामकुमार आउट हुए हैं या फिर मिड लाइन को क्रॉस किया था। I feel it's 1 point each. Look at that. Manish Dul, it's like okay, हाथ खड़ा करो जिसने होमवर्क नहीं किया। मैडम मैंने नहीं किया था। He actually put up his hand and he went back into the lobby. No, my friend. It is lot of cameras covering you up, and it is a production of international standards. You cannot do such mistakes. That was
Oh, look at this. Look at this. Once again by Vinay Virendra. Number 5 out. Attacking the right corner, getting that point. But I loved what Manish Dul did. I will really want to see that in another replay. He came out of the lobby, Harshit, completely. Then he realized that, arey, nahi, nahi, main to bahar aa gaya. Then he wants to go back. And he actually went back and stood inside the lobby. That's great. और जिस तरह से आपने बात की कि विनय वीरेंद्र ने एक अच्छा पॉइंट वहां पर प्राप्त किया, कॉर्नर को अपना शिकार बनाया और गोविंद गुर्जर यहाँ पर अरावली एरोज को जैसे इस मुकाबले में वापसी करने का एक हल्की सी झलक मिलती है, परंतु वापस उसे गवा देती है। जैसे एक बार फिर से मौका बन रहा था कि क्या अरावली एरोज सेकंड हाफ में एक अच्छी शुरुआत कर चुकी है, उन्हें मौका मिल रहा है मुकाबले में वापसी करने का, परंतु एक बार फिर से मुरथल मैग्नेट्स कभी भी उन्हें मुकाबले में वापसी करने का मौका इस मुकाबले में दिया नहीं है। और नवीन देखिए, आपने कहा था कि जिस तरह से टीचर पूछता है कि किसने होमवर्क नहीं किया है, तो क्या इतनी आसानी से हाथ खड़ा कर दिया जाता है, या फिर जब जल्दी हाथ खड़ा किया जाता है जब पूरी क्लास ने नहीं किया और आपने इकलौते ने किया हो? That's what I used to do. But the body language somewhere will be making sure that, you know, in the moment of the heat or in the moment of the fear, you just put your hands up, and then suddenly when nobody's putting your hands up, then they put the hand down. That's what Manish Dul did, and it was so nice to see. Because see, all these lads are just very young, and they are learning the art of kabaddi, and they will be going up in the ladder for a very long time. But Vinay Virendra now puts in that surprise double ankle hold from left in to send out Gangaram. Gangaram has looked good today, Harshit, but again and again, let me not just go back and say this, but Aravalli Arrows Raiders are forcing me to say this, that the big beam, Jai Bhagwan, is missing. Yes, for sure. और देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप किसी भी एक रेडर के भरोसे, और युवराज सिंह को आपने जरूर वहां पर सब्स्टिट्यूट किया था, तौसीफ अहमद को आपने अंदर बुलाया था, उनसे आप ज्यादा रेड करा नहीं रहे, गंगाराम को आप एक ऑलराउंडर के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। आपके लिए आज सबसे सर्वश्रेष्ठ रेडर आपके राम कुमार रहे हैं, जो डू और डाई रेड में यहाँ पर धर दबोचे गए थे, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से मैट पर आने का मौका नहीं है। और नवीन, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा, अरावली एरोज अपने रेडर्स को बहुत समय के बाद रिवाइव कराती है। कल भी हमने देखा क्यों हारी थी, क्योंकि जय भगवान ज्यादा समय तक कोर्ट पर नहीं थे, वो बेंच पर ज्यादा समय के लिए वहां पर मौजूद थे। अरावली एरोज रिवाइवल नहीं करा पाती है अपने रेडर्स का, वो ज्यादातर अपने डिफेंस पर खेलना पसंद करती है। Very nicely put across. Very nicely put across. As Umesh Pawar goes in for the super tackle situation, he does not try anything really heroic. But I loved when we just had that frame of the timeout. Kapil Gurjar, who's now raiding, was just talking to Shankarji, the coach of Aravalli Arrows. He looked determined. The body language and the way he was animated, he just said, okay, come on, this is a super tackle situation और हम point लेना ही लेना है। और देखिए अभी क्या हो गया, Vinay Virendra is up against Kapil Gurjar and he's got something to prove. Has he got it? No, not this time. 1 point on a do or die raid. Lokesh Gosalia has to go back on the bench. देखिए, ये थोड़ी सी गलती, और देखिए कहां पर जाकर एक बार फिर से डिफेंड करना चाहते थे, टैकल करना चाहते थे, एडवांस टैकल बॉक लाइन के इतना जाके अगर आप आगे करते हैं तो उससे होता क्या है, अरावली एरोज के पास अब महज 2 खिलाड़ी वहां पर कोर्ट पर रह गए हैं, कोई सब्स्टिट्यूट किया नहीं गया है, यानी कि कपिल गुर्जर के पास यहाँ पर रेड करने का मौका बनेगा। ये जरूर थोड़ा सा एक चिंताजनक विषय है। अरावली एरोज अगर एक बार पुनः यहाँ से ऑल आउट की तरफ जाएगा तो एक कड़ी परिस्थितियां बन जाएगी और वहां से वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप वापसी कर सकते हैं। 17 पॉइंट की लीड, लगभग 13 मिनट का समय आप वापसी कर सकते हैं। और यहां पर महेंद्र और कपिल गुर्जर, 2 बेहतरीन डिफेंडर्स मौजूद हैं और सुपर टैकल की उम्मीद थी, पर उमेश पवार ने इंश्योर किया कि चलिए कुछ पॉइंट लेकर जाएंगे। And I think he's cleaned up. 1 point, Murthal Magnet. Kapil Gurjar, yeah, finally he gets that all-important revenge that he was waiting for, and he'll be happy because Aravalli Arrows are somewhere now staring at another all-out. So that is another rubbing salt to injury. Look at this on a do-or-die raid. Can you believe what will be going in the mind of Tawseef Ahmed now? He'll have to make sure he gets that bonus. Yes, he's been given the bonus, but he'll have to get a touch point somewhere. Oh, that was so good. The brilliance of right corner Vijay Kumar actually saving Rahul, who has been substituted. Look at that, there was Krishan Dul. Yeah, it was Krishan Dul saving Rahul, but then on the save, somewhere Tawseef Ahmed got a touch onto him, and that is Aravalli Arrows' luck going their way. Oh, unbelievable Harshit there. बिल्कुल, और ये वो कबड्डी का खेल है
और माफ कीजिएगा यहाँ पर तौसीफ अहमद जरूर थे और राम कुमार वापसी कर रहे हैं, अच्छी संकेत है। अब जरूर सब्स्टिट्यूट करके राम कुमार लीजिए आप, ये टैकल पॉइंट्स भी लाकर दे सकते हैं। सोलो सा ये टैकल किया था और ये सुपर टैकल के पॉइंट्स भी आप उनके खाते में लिख दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, काबिल तारीफ प्रदर्शन। विष्णु साहू को शायद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर खेलने का मौका मिला था और तौसीफ अहमद की तारीफ करनी होगी। ये वो महत्वपूर्ण समय होता है, आपने क्या कराया है, एक तो राम कुमार का रिवाइवल कराया है और अब आपके पास कोर्ट में 3 मेंबर मौजूद है। 14 पॉइंट की लीड है, 11.25 मिनट में 14 पॉइंट की लीड बहुत ज्यादा कबड्डी के मायनों में होती नहीं है, कभी भी आप वापसी कर सकते हैं और राम कुमार जानते हैं कि उनका मैट पर खड़ा रहना बहुत आवश्यक है और सुपर टैकल के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। Absolutely. And what has also happened is, in that super tackle, Mahendra Chaudhary got revived. So, there are 2 proper defenders along with Ram Kuwar who can also go in and raid. So, that is really nice for the Aravalli Arrows in this situation. They can again go in for that super tackle and make sure they get that point. Vishnu Sahu is also there in the chain along with Mahendra Chaudhary. But this time Umesh Pawar is very, very smart and goes back empty-handed. देखिए अब मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि वहाँ पर विष्णु साहू को भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर रेड करने का मौका मिला है। इन्होंने भी शुरुआती क्षणों में, मुझे याद है सर्वाइवल राउंड में शायद इन्हें खेलने का क्या मौका मिला था। 11 नंबर जर्सी हैं और किस तरह से अब अगर इन्हें बतौर रेडर टीम में इंक्लूड किया गया है, क्या अंदर जाना चाहेंगे? देखिए ज़्यादा बुरा विकल्प होगा नहीं कि अगर आप वापस जाएं, शायद अभी कुछ मिनटों के लिए दोनों ही टीम डू और डाई रेड पर खेलना चाहेगी और ये उमेश पवार ने चलिए तालियां बजाकर बोल दिया कि अब आने वाली है डू और डाई रेड। पूरी तरह से चौकन्ने हो जाइए मुर्तल मैग्नेट्स। Spend some time, Arshit. I actually want him to spend some time, kill that clock because the lead is nice, okay? And then he can go in and actually kill some clock. He still has 10 more seconds to go. And next raid will definitely be a do or die raid for the Aravalli Arrows. This is good thinking. He came in, he just did not go back very quickly. And then, now this is a moment of truth for Ram Kuwar, who has done so very well in this do or die raid. If he goes out, it's only Vishnu Sahu and Mahendra Chaudhary left there for the Aravalli Arrows. He will be trying to not just get the bonus, but get a touch point, but a diving ankle hold from the left corner, Vijay Kumar. How good he has been today. Marvelously executed ankle hold. और विजय कुमार, देखिए राम कुमार निश्चित तौर पर टो टच करने का शायद थोड़ा सा प्रयास किया था और विजय कुमार ने आज लेफ्ट कॉर्नर के तौर पर क्या अद्भुत लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मुकाबलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन और एक और डू और डाई रेड। परंतु यहाँ पर आशु मलिक होंगे, 11 नंबर जर्सी और महेंद्र पर जिम्मेदारियां थी और आशु मलिक ज्यादा अनुभवी हैं, जानते हैं कि वहां पर विष्णु साहू जो कि एक रीडर है उन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। Yeah, and really appreciated the big heart of Vishnu Sahu also. He knew that the big raider is coming against him. But then he also went in for the tackle instead of just surrendering. That is nice to see. But it's once again down to Tauseef Ahmed. He's done it before. Now can he do that once again? And if he does, it will be really nice. Got the toe touch, is it? Oh no! Umesh Pawar says no way. And he again goes back and tries. उमेश पवार ने क्या ढरासा दिया था, इसके चलते तुरंत कह दिया कि चलिए नहीं था। Yeah. And has he got him? Left cover this time. He's made the error. Bonus +1. Unbelievable. This is what we should not be seeing it. He knows it. Manish Dhul. और एक बार फिर से आशु मलिक, 77 नंबर जर्सी गोविंद गुर्जर वापसी कर रहे हैं, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। डिफेंस एंकल होल्ड करने का प्रयास था, चलिए इस बार कोई मौका नहीं बनेगा। गोविंद गुर्जर भी यहाँ पर कोई मौका कुछ खास नहीं कर पाएंगे और इनकी फॉर्म बहुत चिंताजनक है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, नवीन में बताना चाहूंगा गोविंद गुर्जर, परंतु फोर्थ देखिए आप, आशु मलिक ने कहा कि आई एम द सुपरस्टार ऑफ माय टीम और मुझे इंश्योर करना है कि एक और दफा मैं अरावली एरोज को ऑल आउट कर दूं। अब यहां से वापसी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि 7.5 पौने 8 मिनट का जो समय शेष है उसमें 18 पॉइंट की जो लीड है मुर्तल मैग्नेट्स के पास। हालांकि कबड्डी में आप कभी भी वापसी कर सकते हैं, एक रेड में आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ला सकते हैं, परंतु अब अगर टू बी प्रैक्टिकल देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल क्या होगा। Yeah, absolutely. It is practically impossible, but still, Vinay. Oh, there's a conversation. Umesh Pawar somewhere asking Ram Kuwar to go into the lobby. Oh, talking. Work is for us. Do not bother, or else you will be penalized. Umesh Pawar, my friend, understand. Harshit,
is the main man to talk, not even me. So you don't talk is what we're requesting, isn't it, Arshit? देखिए नवीन, आप भी झूठ बोलते हैं, मुझे पता लगा आज। Right, so this is what the lads have to learn, you know, just jokes apart, but this is how the lads have to learn. See, I understand there are instances that you know, you will be given a few decisions against you, you will be getting those coming in your way. See, that's the sportsman's life. You'll have to take it with both hands. Sometimes you will be lucky that the decision which was not to be given for you, you will get that one day, but sometimes it will go the other way. Yeah, that is life, isn't it? Sometimes you expect that, yes, I was worth of this, but then when you don't get it, you will not stand there and talk and argue, right? You just forget that moment and go ahead. But that is what these lads have to learn, because everybody is watching this more than the selectors or the owners or franchisee, more than the Indian selectors. More importantly, you know what? The entire India is watching. Entire India is watching, and a fantastic ankle hold once again by Vijay Kumar, and bonus has been given. Let me just go ahead and complete that point for you, Harshit. You know, when entire India is watching, what I mean to say is small kids, the aspirational kids who want to take up Kabaddi as a professional sport is watching you on an international platform like Fan Code. So when you do not behave well on the Kabaddi mat, it gives a wrong impression for the kids also, because I have seen in my own eyes, Harshit, when we started the franchisee Kabaddi tournaments, franchisee leagues, what used to happen was people, I mean kids, I'm saying, not even people, I'm saying kids, school-going kids, okay? They playing on road, they playing on top of a rooftop. The first thing what they do, you know, the Thai-Fi, when they get a point, the Thai-Fi had become such a craze that they were following it and doing it. Now, when you swear on the mat, kids will pick up that bad habit also, isn't it? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इसे बताया और अच्छी तरह से आपने अंडरलाइन किया स्कूल किड्स, स्कूल गोइंग किड्स, क्योंकि जिस तरह से आप जो देखते हैं वो आप सीखते हैं, हमेशा ये कहा जाता है, और आप ये भी सीख रहे होंगे। आशु मलिक की करामाती रेंज भी यहाँ पर निश्चित तौर पर हमारे भारत का युवा सीख रहा होगा, और ये है वो खिलाड़ी आशु मलिक, ये भारत का आने वाला सितारा है, और इस रेडर का कहाँ किसी के पास कोई हल है। क्या बात है, क्या अद्भुत खेल का प्रदर्शन यहाँ पर आशु मलिक और मुरथल मैग्नेट्स। एक बार फिर से पेरियार पैंथर्स से मुकाबला हारा था, बट उसके बाद से यहाँ पर लगातार एक बार फिर से इंटेंटफुल नजर आए हैं, और आशु मलिक जो आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध, वो पूरी तरह से इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज में अपना सुपर 10 ही नहीं 12 पॉइंट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं आशु मलिक। Oh yes, Gangaram wanted the defense to come to him. It is that sort of a raider where he will not try his best. He will want the defense to commit an error, and he tumbles upon the captain of Murthal Magnets to get that point. So the defense have to be very careful when Gangaram is coming towards you, because his footwork is such that he is not too tall a raider. He uses his advantage. He plays under his strengths. He does not go in for that long-legged stretched bonus or a toe touch. He always there plays along on the bonus and balk line, and he actually initiates the defense to commit some error. And once again, Umesh Pawar goes in with that big running hand touch and gets it out. And then, yes, talking about kids picking up skills, Harshit, we will once again be very, very thankful to Sanskar School, Jaipur, because as an educational institute, if they have given such wonderful arena and wonderful venue for us to conduct this Yuva Kabaddi series summer edition, it is marvelous. Because the kids, of course, coming from Sanskar School, tomorrow being Sunday, of course, they've got the off day from school. They can come in, watch this match live, and then pick up a few skills. Get aspirational. That is what is important. The inspiration that has been provided by these lovely young superstars of Yuva Kabaddi series will be very, very aspirational sort of a thing for all the youngsters and kids watching this game. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल आपने सही तरह से इस तरह से बताया। और जरूर उमेश पवार की भी हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे, और हमने चर्चाएं की यहाँ पर आज किस प्रकार से अरावली एरोज यहाँ पर जय भगवान और राहुल चौधरी मौजूद नहीं थे। शुरुआत में महिपाल वहाँ पर मौजूद थे, परंतु उसके बाद वो भी नहीं दिखे, और यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के लिए लगातार जो रेडर जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, लगातार उमेश पवार जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, आशु मलिक और विनय जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, मुरथल मैग्नेट्स बताते हुए कि क्यों वो सर्वाइवल राउंड में सर्वश्रेष्ठ टीम्स में से एक थी।
क्योंकि जिस अंदाज Yeah. में इनकी पूरी टीम और विजय कुमार की फॉर्म में आना तो ये सोने पर सुहागा है। Oh, he did not cross the midline. 1 point. And the Sone Pe Suhaga also from Krishan Dul that time. It was so close. Vishnu Sahu actually would be feeling that, oh, I missed the train ticket. I've missed the ticket there with one small ₹1 coin that is not there in my pocket. That is what he will feel. Oh my God, that was so close. But then, yes, talking about all these wonderful things that is happening, we are just witnessing a super tackle situation. And in the previous raid, when Umesh Pawar put in that strategy, when he went in, now he goes in with the backtracking skills against Govind Gurjar. But that tackle or the counter attack on Kapil Gurjar was so very ferocious in the previous raid by Umesh Pawar. He actually blocked Kapil Gurjar on the neck, and then the outward turn. It is easy for a raider to have an inward turn towards the midline, but then an outward turn was very well executed, and then Aravalli arrows have once again been pushed for the all out. And Harshit, do you know, is this the third all out or the fourth all out? ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या चौथी बार ऑल आउट करते हुए नजर आए रावली एरोज को, ऐसा जरूर नजर आ रहा है। 53-29 एक बहुत बड़ा यहाँ पर खेमा आपको नजर आ रहा है, एक बहुत बड़ी लीड की तरफ। और लगातार रावली एरोज यहाँ पर लगातार दूसरा मुकाबला हारेंगे जरूर। शुरुआती 2 में से 2 मुकाबले जीत रहा था, वहाँ पर जय भगवान जरूर नहीं थे। और विनय वीरेंद्र भी अपना कार्य करते हुए और देखिए, मुझे कप्तानी बहुत अच्छी लगती है। मनीष धुल जिस प्रकार से कप्तानी करते हैं और इन सभी रेडर्स में जो समावेलन है, जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, बिल्कुल भी किसी में भी सेल्फ ऑबिशन नहीं है कि मैं ज़्यादा रेड करूंगा, मैं ज़्यादा पॉइंट्स प्राप्त कर सकता हूं। जब जब जिसकी आवश्यकता लगती है उस रेडर को तब पता होता है। सभी खिलाड़ियों को अच्छी तरह से पता है कब किसकी कहां उपयोगिता है, कहां पर किसी क्या स्ट्रेंथ है। टीम बॉन्डिंग में शायद 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए मुरथल मैग्नेट्स को। नवीन, आप कितने देना चाहेंगे? No, very much. Rightly put across, because when see Ashu Malik is not having any pressure today. He does not even have to bother. But even then, he just goes in, crosses the balk line. I guess he will run the clock down. Last minute left in this game. Aravalli arrows will not be even getting 1 point from this match. Murthal Magnets have come back into this entire booster round, I must say. After that big loss against Periyar Panthers, where Ashu Malik was looking clueless, was looking completely hazeled for what's happening. Now see what is done. Yesterday against the Humpy Heroes, it was his Super 10 which got them the match. And today he is so confidently standing there because Umesh Pawar and Vinay Virender have performed well. And when the raiding trio performs well, automatically what happens is the corners, the Vijay Kumars and the Krishan Duls performed really well. And even today, when Sanjay Dul was an issue yesterday against the Humpy Heroes, he's also the team unity that we are talking about. Very well knit team is Murthal Magnets, especially the last couple of matches. I think this is going to be the last raid, Harshit, of the match. बिल्कुल एब्सोल्युटली। और यहाँ पर हमें क्या मुरथल मैग्नेट्स लगातार जीत की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। कपिल गुर्जर ने प्रयास जरूर किया है, परंतु जानते हैं कि ये मुकाबला मुरथल मैग्नेट्स के पक्ष में और 25 पॉइंट के शायद एक बड़े अंतराल से रावली एरोज ये मुकाबला हारेगा। परंतु मैं देखना चाहूंगा ये टीम अब किस प्रकार से वापसी करेगी, किस तरह से जय भगवान वापसी करेंगे, राहुल चौधरी जब इनकी टीम में होंगे। जरूर शंकर ने यहाँ पर बतौर कोच थोड़ा सा प्रयास किया था कि चलिए थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट किया जाए, परंतु मुरथल मैग्नेट्स दे डिजर्व द विक्ट्री। जिस अंदाज में वो खेले हैं, बहुत अच्छा खेले, इनका डिफेंस बहुत अच्छा खेला है। विजय कुमार बतौर डिफेंडर 8 पॉइंट लाना। नवीन, किस प्रकार से प्रदर्शन की में लगातार बढ़ोतरी हो रही है बतौर डिफेंडर, ये देखकर अच्छा लग रहा है। No, absolutely. And as you rightly mentioned, Shankar, the coach of Aravalli Arrows, has somewhere tried a big experiment to actually explore and invent a winning combination. You cannot invent a winning combination. You just need to be there and try and put out the best combination ever, which can win a match. But somewhere Shankar has gone in too deep by not having Rahul Chaudhary and Jai Bhagwan, both of them. Of course, there may be a few obligations where they might not be allowed, or rather some injury or some break that has been given to the main players. So somewhere he's tried to have a big experiment going, and that is exploded back in a very wrong way. But Vinay Virender, very good in the rating, and along with Umesh Pawar. So this team looks like they will definitely make it through
to that challenger round, as they very easily made it to the booster round from the survival round. So Murthal Magnets, once again, I guess after this big win, they will come back onto the second position, which they lost to Humpy Heroes, where Humpy Heroes actually came back to that second place when they won the match against Taroba Tigers in the morning 10 a.m. match. But now I'm sure Murthal Magnets will be really happy to make sure they go ahead and steal back that second position on the what Ankpatti. No, what you said in Jaipur? What was that? Point table? अंक तालिका. Yeah, Ank Talika. That's what it is. चलिए मुर्तल मैग्नेट्स 55-30 से यहाँ पर हराते हुए नजर आएगा अरावली एरोज को 31 रेड पॉइंट्स. इसमें एक बड़ा मार्जिन है, ज्यादा बड़ा मार्जिन था नहीं हाफ टाइम के समय, परंतु अब बहुत बड़ा मार्जिन बन जाएगा. टैकल पॉइंट्स 15 वहां पर मुर्तल मैग्नेट से प्राप्त किए, और 15 पॉइंट्स में से देखिए ये जानकर आश्चर्यजनक होंगे कि 8 पॉइंट तो शायद वहां पर विजय कुमार ने प्राप्त किए. एक बार फिर से बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन और ऑल आउट पॉइंट्स 8 पियाने के 4 बार अरावली एरोज को वहां पर ऑल आउट किया था. अतिरिक्त पॉइंट दोनों ही टीम को एक मिलेगा, पर एक बार फिर से डोमिनेट करता हुआ नजर आया मुर्तल मैग्नेट्स, और क्या वापसी कर रहा है. सच में एक बहुत ही अनुपम खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया, विश्वसनीय था. Yeah, absolutely. And you also rightly mentioned somewhere, Harshit, where the Aravalli Arrows take a lot of time to revive the Raiders. And that is what is the biggest worry today. Because their techniques, their strategies did not work, and the experimentation backfiring big time. And as I was expecting, the Murthal Magnets are coming back on that second position. And who can pounce upon the Periyar Panthers is yet to be seen. Because that is going to be a big challenge, as we also have a match at 6 p.m. Today in the evening, where it will be a wonderful clash. There we go, 6 p.m. Periyar Panthers versus Panchala Pride. Do you expect Panchala Pride to trounce upon Periyar